Jai Siya Ram, Jai Sri Ram. Chapter Reproductive Health. Reproductive health. According to the World Health Organization (WHO), Geneva में जो की है, reproductive health means a total well-being in all aspects of reproduction, i.e., physical, emotional, behavioral, social. Okay. Reproductively healthy society, a society with people having physically and functionally normal reproductive organ and normal emotional and normal behavioral interaction among them in all sex related aspects might be called reproductive healthy society. Reproductive health problems and strategies. India was amongst the first country in the world to initiate action plans and program at a national level to attain total reproductive health as a social goal. These programs called family planning were initiated in 1951. These programs called family planning were initiated in 1951. These programs called family planning were initiated in 1951. Okay. Improved programs coverage wider reproductive related areas are currently in operation under the popular name Reproductive and Child Health Care (RCH) program. Improved programs covering wide reproductive related areas are currently in operation under the popular name Reproductive and Child Health Care program (RCH) program. Okay, objective of Reproductive and Child Health Care program: awareness about reproductive related aspects with the help of audiovisual and the print media. Governmental and non-governmental agencies have taken various steps to create awareness. A major role is also played by parents, close relatives, teachers, friends. Introduction of sex related education in schools should be encouraged. Proper information should be provided about reproductive organs, adolescence and related changes. Proper information should be provided about reproductive organs, adolescence and related changes, safe and hygienic sexual practices, sexually transmitted disease, STDs, AIDS, reproductive organs. ठीक है. Proper information should be provided about reproductive organs, adolescence and related changes, safe and hygienic sexual practices, sexually transmitted disease, STD, AIDS. Okay. Strategy क्या है? People especially fertile couple and those in marriageable age group should be educated about available birth control option, contraceptive method, care of pregnant mother, postnatal care of the mother and child, postnatal care of mother and child, importance of breastfeeding, equal opportunities for the male and female child, awareness of problems due to uncontrolled population growth, awareness of problems due to uncontrolled population growth, social evil like sex abuse and sex related crimes. Okay, अब देखते हैं सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स टू अटेन इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, material support. These are essential to provide medical assistance and care to people in reproduction related problems are. These are essential to provide medical assistance and care to people in reproduction related problems like. This is essential to provide medical assistance and care to people in reproduction child related problems like pregnancy, delivery, STDs, abortion, contraception, menstrual problem, infertility, etc. Implantation of better technique
Implementation of better technique, statutory 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 ban on amniocentesis for sex determination to legally implementation of better technique statutory ban on amniocentesis for sex determination to legally check increasing menace of female feticide, massive child immunization, etc. are some programs that merit mention in this connection. Statutory ban on amniocentesis for sex determination to legally check increasing menace of female feticide, massive child immunization, etc. are some programs that merit mention in this condition. Amniocentesis, a procedure performed during pregnancy to obtain amniotic fluid to test for chromosomal abnormalities and fetal infection conditions it may diagnose. This procedure is used to test for the presence of certain genetic disorders such as Down syndrome, hemophilia, sickle cell anemia, muscular dystrophy, etc., and determine the survivability of the fetus. This procedure is used to test for the presence of certain genetic disorders such as Down syndrome, hemophilia, sickle cell anemia, muscular dystrophy, etc., and determine the survivability of the fetus. Okay, misuse of amniocentesis. It is being used to kill the normal female fetus. Procedure. The test usually done at 14 to 18 week of trimester, means first trimester. 14 to 18 week of gestation matlab first trimester. Okay. Saheli, a new oral contraceptive for females, was developed by scientists at Central Drug Research Institute (CDRI) in Lucknow. Saheli, a new oral contraceptive for the females, was developed by scientists at Central Drug Research Institute (CDRI) in Lucknow, India. Non-steroidal use once in a week. Okay, contain centrochromin. एक्शन मैकेनिज्म क्या है इसका? मॉड्यूलेट एस्ट्रोजन रिसेप्टर को ये मॉड्यूलेट कर देता. प्रिवेंट इम्प्लांटेशन एस्ट्रोजन इसे मॉड्यूलेट कर देता है. थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम नहीं हो पाया क्योंकि ये एस्ट्रोजन के रिसेप्टर को ही मॉड्यूलेट कर दिया. तो एस्ट्रोजन आएगा तो इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, तो फिर मतलब एस्ट्रोजन का इफेक्ट भी नहीं हो पाएगा, तो मतलब थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम नहीं हो पाया, प्रोलिफरेशन नहीं हो पाया. बिल्कुल. तो फिर इम्प्लांटेशन कैसे होगा? तो प्रिवेंट इम्प्लांटेशन. ओके. Indication of improved reproductive health of the society, better awareness about sex related matters, increased number of medically assisted deliveries, better postnatal care leading to decreased maternal and infant mortality rate, better postnatal care leading to decreased maternal and infant mortality rate, increased number of couples with small families, better detection and cure of STDs, better detection and cure of STDs, overall increased medical facilities for all sex related problems. Overall increased medical facilities for all sex related program. Overall increased medical facilities for all sex related problems. Overall increased medical facilities for all sex related problems. Okay. Population explosion. Total number of individual of
species present in a given area at a particular time. World Population Day 11th July. Demography, study of population, unit of population, individual, officially counting of population, census, undertaken every 10 years, official counting of population, census, undertaken every 10 years. ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन इसे कहते हैं सेंसस, अंडरटेकन एवरी 10 years. ओके, इन इंडिया फर्स्ट सेंसस हुआ था 1872 और फिर लास्ट सेंसस हुआ है 2011 में. तो 10 साल तो हो गया, पता नहीं लास्ट सेंसस कब हुआ है, 2011 में. ठीक है, फर्स्ट सेंसस हुआ था 1872 में. The world population which was around in 1900 2 billion 2000 million. Okay, in 2006 billion, बाप रे डबल से भी ज़्यादा. In 2011 7.2 million. In 2011 7.2 billion. 1900 में 2 billion. In 1900 2 billion. In 2006 billion. In 2006 billion. In 2011 7.2 billion. In 2011 7.2 billion. The India population which was approximately the India population which was approximately 350 million at the time of our independence. In India population which was approximately 350 million at the time of independence. In 2001 million. In 2001 billion. In 2001 billion. In 2011 1.2 billion. In the India population which was approximately 350 million at the time of our independence. In 2001 billion. In 2001 billion. In 2011 1.2 million. The India population which was approximately 350 million at the time of our independence. The India population which was approximately 350 million at the time of our independence. The India population which was approximately 350 million at the time of our independence. अच्छा, वो था वर्ल्ड पॉपुलेशन 2 बिलियन. अच्छा, और 1 बिलियन इंडिया 2000 में वर्ल्ड का 6 बिलियन. अच्छा, वर्ल्ड पॉपुलेशन इन 1900 2 बिलियन. ठीक है, 2000 में 6 बिलियन और फिर 2011 में 7.2 बिलियन. ये वर्ल्ड पॉपुलेशन. इंडिया में the India population which was approximately 350 million at the time of our independence. 350 million at the time of our independence. Okay, in 2000 1 billion. 2011 1.2 billion. मतलब 11 साल बाद 200 मिलियन बढ़ गया. वाह, शाबाश. In 2001 billion. In 2001 billion. In 2001 billion. In 2011 1.2 billion. In 2011 1.2 billion. In 2011 1.2 billion. Okay, ratio of world is to India is equals to 6:1. Ratio of world is to India बराबर 6:1 according to 2001 census. 2001 के census के according. Okay, every sixth person in the world is an Indian. Every sixth person in the world
is an Indian. Every sixth person in the world is an Indian. According to 2001 census report, the population growth according to 2001 census report, the population growth rate was still around 1.7%. According to 2001 census report, the population growth was still around 1.7%. मतलब 17 per thousand per year. According to 2011 census report, the population growth rate was less than 2%, i.e. 20 per thousand per year. अच्छा. Reason for population explosion: a rapid decline in death rate, maternal mortality rate, infant mortality rate. और सेकंड क्या है? इंक्रीज इन नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन रिप्रोड्यूसिबल एज. ओके. पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिपेंड अपॉन population growth rate depend upon birth rate. Population growth rate depend upon birth rate, fertility rate, death rate, mortality rate, migration, age and sex ratio. Population growth rate depend on birth rate, fertility rate, fertility rate, death rate, mortality rate, migration, age and sex ratio. Population growth rate depend upon birth rate, fertility rate, death rate, mortality rate, migration. हाँ, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिपेंड अपॉन बर्थ रेट, फर्टिलिटी रेट, डेथ रेट कितना, मॉर्टलिटी रेट है, माइग्रेशन, एज एंड सेक्स रेशियो. बर्थ रेट नंबर ऑफ live birth per thousand individual in a year. It never be negative, while growth rate may be negative. Birth rate number of live birth per thousand individual in a year. It can never be negative. हाँ बिल्कुल, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बर्थ हुआ ही है, तो फिर it can never be negative. Will growth rate जो है, हाँ वो नेगेटिव हो सकता है क्योंकि इस बार कम ग्रोथ रेट हुआ है, तो इसलिए. डेथ रेट और मॉर्टलिटी रेट, नंबर ऑफ डेथ पर इंडिविजुअल इन अ ईयर. माइग्रेशन, इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशन. ओके. फोर्थ, एज एंड सेक्स रेशियो. एज 15 to 45 तक है. प्री रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव. रिप्रोडक्टिव वाले का है एज 15 to 45. ओके. Note: the number of female individual in active reproductive age. The number of female individual in active reproductive age 15 to 44 years influence the birth rate. हाँ, क्योंकि फीमेल का ज़्यादा रहेगा नंबर तो फिर होगा ही. The number of female individual in active reproductive age 15 to 44 years influence the birth rate. बिल्कुल. Note: demographic transition. जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब बर्थ रेट बराबर डेथ रेट, बर्थ रेट प्लस इमाइग्रेशन बराबर डेथ रेट प्लस इमाइग्रेशन. इफ बर्थ रेट इज ग्रेटर देन डेथ रेट देन कहेंगे इसे पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ. अगर डेथ रेट ज़्यादा है बर्थ रेट के कंपैरिजन में देने से कहेंगे नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ. ओके. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम. पॉइंट फर्स्ट, motivate small families by using various contraceptive methods. Motivate small families by using
motivate small families by using various contraceptive methods. You might have you might have seen advertisement in the media as well as poster or bill, etc. You might have seen you might have seen advertisement in the media as well as posters or bill, etc. Showing a happy showing a happy couple with two children with a slogan हम दो हमारे दो, we two our two. You might have seen advertisement in the media as well as poster bill, etc. showing a happy family with two children. हाँ ठीक है. Many couples, mostly the young urban working ones, have even adopted as one child norms. Statutory rising of marriageable age of the female to 18 years, that of male to 21 years, female का 18 years और male का 21 years, and incentive given to couple with small families. Birth control method, also known as contraceptive methods, as they prevent conception और pregnancy. conception मतलब हो गया sperm fertilizing ova, इससे prevent करता है, रोकता है. हाँ, also known as contraceptives, they prevent conception or pregnancy. Okay. Ideal contraceptive characteristics. User friendly, easily available, effective. Ideal contraceptive characters. User friendly, easily available, effective, reversible with least or no side effect. It should not interfere with sexual act of user, sexual desire of the user, sexual drive of the user. Natural method or traditional method. It works on the principle of avoiding chance of sperm and ovum meeting. No medicine or device are used, means the side effects are almost nil, but their failure rate is very high. Periodic abstinence, तीन तरह का है ये. पहला periodic abstinence, second coitus interruptus, third lactational amenorrhea. सबसे पहला periodic abstinence और rhythm method. सबसे पहला periodic abstinence or rhythm method. In this, couple abstain or avoid sexual intercourse causing 10th to 17th day of menstrual cycle, as ovulation could be expected. Periodic abstinence or rhythm method. In this, couple abstain or avoid sexual intercourse during 10th to 17th day of a menstrual cycle, or ovulation could be accepted 10th to 17th day तक. ठीक है. In this, couple abstain or avoid sexual intercourse during 10th to 17th day of menstrual cycle, as ovulation could be expected. During this period, the chance of fertilization is quite high. Fertile period इसे कहते हैं. menstrual cycle 28 days का टोटल होता है. तो फिर यहाँ पे ओव्यूलेशन 14th डे पे 28 डेज, बट प्लस माइनस 2 डेज तो लेके ही चलते हैं. ठीक है. तो फिर ओव्यूलेशन 14th डे का है, बट 2 दिन आगे पीछे हो सकता है, मतलब 12th डे और 16th डे भी हो सकता है. और स्पर्म का लाइफ है 2 to 3 days इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, और ओवम की लाइफ है 1 day. ओके. तो फिर अगर 3 दिन पहले भी स्पर्म आएगा तो फिर वो फर्टिलाइज कर सकता है, मतलब 10 11 12 3 दिन हो जाएगा 12, तो फिर ये 10 को भी अगर स्पर्म आएगा तो फिर 10 11 12वां दिन अगर ओव्यूलेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा. तो फिर 10th से लेके और फिर इधर 12 हो गया, 13 14 15 16. ठीक है. अब 16 के बाद अगर 16 को भी इंटरकोर होता है तो फिर 16 17
मेनली 17 तक लेते हैं इसलिए, ठीक है। अगर स्पर्म आता है 14 को, 15, 16, 17, अच्छा 3 दिन, हाँ तो फिर 17, 10th to 17th तक। हाँ क्योंकि नहीं यहाँ पे 17 इसलिए लिए, अगर 16th को ओव्यूलेशन हुआ तो 17 तक ये ओवम जिंदा रहेगा, बस एक दिन 24 घंटा तक, फिर तो उसके बाद वो डेथ हो जाएगा। हाँ तो फिर 10th to 17th डे से फर्टिलिटी ज़्यादा होती है, 10th to 17th डे, ठीक है। फीमेल बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेस ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, मोर देन 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज हो जाता है बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। सेकंड, क्वाइटस इंटरप्टस और विथड्रॉल मेथड, इन दिस फीमेल पार्टनर विथड्रॉ हिज पेनिस just before ejection as to avoid insemination. In this male partner withdraw his penis just before ejaculation as to avoid insemination. In this male partner withdraw his penis just before ejaculation as to avoid insemination. Okay, third आता है lactational amenorrhea, absence of menstruation. There is inhibition of absence of menstruation. Okay, there is inhibition of ovulation and no there is inhibition of ovulation and no menstruation cycle during there is inhibition of ovulation and no menstrual cycle during instance lactation period following parturition तक, मतलब पार्चुरेशन के बाद। हाँ, देयर इज इनहिबिशन ऑफ ओव्यूलेशन एंड नो मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरिंग इंस्टेंस लैक्टेशन पीरियड में कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता। हाँ, पार्चुरेशन के बाद। दिस मेथड इज इफेक्टिव फॉर ओनली 6 मंथ। क्यों? क्योंकि जब आफ्टर पार्चुरेशन यहाँ पे प्रोलैक्टिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो फिर प्रोलैक्टिन नेगेटिव फीडबैक दिखाता है हाइपोथैलेमस को। प्रोलैक्टिन नेगेटिव फीडबैक देता है हाइपोथैलेमस को, एंड हाइपोथैलेमस फिर जब नेगेटिव फीडबैक इसको मिल चुका है तो फिर ये जीएनआरएच नहीं बनाएगा। जीएनआरएच गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जब ये सिक्रेट नहीं होगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी के पास मैसेज नहीं जाएगा। एंटीरियर पिट्यूटरी के पास मैसेज नहीं जाएगा तो फिर ये एलएच और एफएसएच नहीं बनाएगा, तो फिर नो मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड। ओके, अब देखते हैं बैरियर मेथड। इन दिस ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकल मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स। इन दिस ovum and sperm are prevented from physical mating with the help of barrier. सबसे पहला condom made up of thin rubber or latex sheath, available for both male and female. In recent years their use is increased as they prevent for STIs and AIDS. Available for both male and female, ठीक है। In recent years their use is increased as they prevent STDs and AIDS. Okay, male condom. It covers penis before coitus for prevent insemination. Nirod, popular brand name of condom, not reusable. Okay, female condom, femsealed or femidoms, made up of polyurethane. It covers cervix or vagina before coitus. ठीक है। Not reusable. Condom, self-inserted, self-disposal, give privacy to the user. Diaphragm, cervical cap, cervical vault, made up of rubber, covered cervix, reusable. अच्छा, मेल में तो ये reusable नहीं था, फीमेल में ये reusable है। हाँ, बट फीमेल कॉन्डम जो था femsealed और femidoms वो not reusable. ओके, और यहाँ पे ये डायफ्राम,
cervical caps, cervical vault, made up of rubber covered cervix, ये reusable है, and they are mostly used in combination with chemical methods. They are mostly used in combination with chemical methods. They are mostly used in combination with the chemical methods. Chemical methods: spermicidal cream, jellies, and foams are used in combination with the barrier method for increasing their contraceptive efficiency. They contain boric acid, lactic acid, citric acid, ZnSO4, camphor, etc. Spermicidal cream, jellies, and foams are used in combination with barrier method for increasing the contraceptive efficiency. They contain boric acid, lactic acid, citric acid, ZnSO4, camphor, etc. Spermicidal creams, example dolphin. Spermicidal jellies, example perception, Walper paste. Spermicidal jellies, example perception, wallpaper, Walper paste, perception, Walper paste, foam, sponge tablets contain non-oxyl 9 spermicide. It disrupts the cell membrane of sperm. Intrauterine device, IUDs, intrauterine devices, IUDs. These are inserted within the uterus through vagina by the doctors. These are IUDs, intrauterine devices, IUDs. These are inserted within the uterus through vagina by the doctors, medical professionals, and expert nurses. IUDs increases phagocytosis of sperm within the uterus. IUDs increases phagocytosis. IUDs increases phagocytosis of sperm within the uterus. IUDs increases phagocytosis of sperm within the uterus. IUDs increases phagocytosis of sperm within the uterus. They are made up of plastic, metal, stainless steel, or plastic or metal, both mixture of. बॉडी में इतना प्लास्टिक रहता है. IUDs increases phagocytosis of sperm. IUDs increases phagocytosis of sperm within the uterus. They are made up of plastic, metal, stainless steel. Okay, for all types of IUDs, अच्छा ये सभी के लिए IUDs increases phagocytosis of sperm within the uterus. ठीक है. Non-medicated IUDs, example lipid loop, increases tubal motility, i.e. earlier transfer of ovum increases tubal motility. ठीक है, तो फिर से क्या होता है? Earlier transfer of ovum into uterus even though it is not ready for implantation. Earlier transfer of ovum into the uterus even though it is not ready for implantation induces change in uterus, gametotoxic effect or spermicidal effect. Okay, अब देखते हैं medicated copper releasing IUDs, example copper T, copper 7 multiloaded 375, copper T, copper 7 multiloaded 375, copper T, copper 7 multiloaded 375. Copper 2 plus suppresses sperm motility and fertilizing capacity of sperm. Copper 2 plus suppresses sperm motility and fertilizing capacity of sperm. It increases production of toxic cytokinins, which will target sperms.
copper T, copper 7 multi-loaded 375, copper T, copper 7 multi-loaded 375, copper 2 plus suppresses sperm motility, copper 2 plus suppresses sperm motility and fertilizing capacity of sperm. कॉपर 2 प्लस सप्रेसेस ये कौन सा है, ये मेडिकेटेड वाला है. कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टीलोडेड 375, कॉपर 2 प्लस सप्रेसेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, कॉपर 2 प्लस suppresses sperm motility and fertilizing capacity of sperm. It increases production of toxic cytokinin which will target sperm. Copper 2 plus suppresses sperm motility and fertilizing capacity of sperm. Copper 2 plus suppresses sperm motility and fertilizing capacity of sperm. Copper 2 plus suppresses sperm motility and fertilizing capacity of sperm. Copper 2 plus suppresses sperm motility. Copper 2 plus suppresses sperm motility and fertilizing capacity of sperm. It increases production of toxic cytokinin which will target sperm. Copper 2 plus suppresses sperm motility and fertilizing capacity of sperm. Copper 2 plus suppress sperm motility and fertilizing capacity of sperm. It increases the production of toxic cytokinin which will target sperm. ठीक है. सेकेंड है hormone releasing IUDs. Example progestasert, LNG20, levonorgestrel. Progestasert और LNG20, progestasert, LNG20, levonorgestrel. इन दोनों में क्या रहता है, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन इन वुमेन्स ब्लड, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज. ठीक है. तो फिर ये क्या करता है, जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाएगा तो फिर GnRH, FSH, LH ऑलरेडी कम हो जाएगा. जब प्रोजेस्टेरॉन की लेवल इंक्रीज हो जाती है तो फिर GnRH, LH, FSH इन सब की सिक्रेशन उस टाइम कम हो जाती है. तो फिर इन सम इट हैज़ सम एडिशनल फंक्शन. It makes uterus unsuitable for implantation. It makes cervix hostile to sperm. It inhibits ovulation and suppress luteal activity. It inhibit ovulation and suppresses luteal activity. They makes the uterus unsuitable for implantation. They makes uterus unsuitable for implantation. It makes cervix hostile to sperm. It makes cervix hostile to sperm. It makes the cervix hostile to sperm. It inhibits ovulation and suppresses luteal activity. They makes uterus unsuitable for implantation. Con hormone releasing IUDs. Okay. It makes the cervix hostile to uterus. It inhibits ovulation and suppress luteal activity. Okay. IUDs are well accepted by females in India. IUDs are very effective for delay in pregnancy or space between children. Oral contraceptive pills. Progesterone alone or in combination with estrogen are used orally as a contraceptive. Progesterone alone or in combination with estrogen are used orally as a contraception in the form of pills.
in the form of piles. Progesterone only piles. This piles consumed by women during all day of menstrual cycle. These pills consumed by women during all days of menstrual cycle. Progesterone estrogen combination pills. Example: Mala-D and Mala-L. Mala-D and Mala-L. These piles have to be consumed for 21 days, followed by gap of 7 days for menses. These piles have to be consumed for 21 days, followed by gap of 7 days for menses, starting from 5th day of menstrual cycle to 25th day of menstrual cycle. Okay. They inhibit ovulation as well as implantation. They alter the quality of cervical mucus to prevent or retard entry of sperm. They suppresses motility and secretory activity of the oviduct. They inhibit ovulation as well as implantation. They alter the quality of cervical mucus to prevent or retard entry of sperm. They suppresses motility and secretory activity of oviduct. Hypothalamus, GnRH. हाइपोथैलेमस सबसे पहले ये दवाई क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा देता है. तो फिर जब प्रोजेस्टेरॉन की लेवल बढ़ती है, मेक्स सर्वाइकल थिक म्यूकस. प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा तो फिर मेक सर्वाइकल म्यूकस थिक. हाँ, तो इस पर जा ही नहीं पाएगा बॉडी में. सिंपल, मेक्स सर्वाइकल म्यूकस थिक. और ये क्या करता है, इनहिबिट ओव्यूलेशन. ये प्रोजेस्टेरॉन का जब लेवल इंक्रीज होता है तो ये नेगेटिव फीडबैक दिखाता है. हाइपोथैलेमस उनको नेगेटिव फीडबैक भेजता है जीएनआरएच के लिए. हाँ, और फिर ये एलएच को नेगेटिव फीडबैक सेंड करता है. एलएच को नेगेटिव फीडबैक सेंड किया तो मतलब ओव्यूलेशन होगा ही नहीं, तो फिर ये इनहिबिट ओव्यूलेशन. और जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज कर देते हैं तो प्रोलिफरेशन ऑफ इंडोमेट्रियम. प्रोलिफरेशन तो हो गया, बट ये नेगेटिव फीडबैक किसको दिया, एफएसएच को, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. तो अब दूसरा और फॉलिकल्स बनेगा ही नहीं. अगर ये इंडोमेट्रियम अगर प्रोलिफरेशन हो भी रहा है, प्रोलिफरेशन होकर वो मेंटेन है, ठीक है. और फिर एलएच, तो अब एलएच की तो मतलब नेगेटिव फीडबैक है, तो फिर अब एलएच सर जाएगा नहीं, ओव्यूलेशन होगा नहीं. और एफएसएच तो फॉलिकल्स ही डेवलप नहीं हो रहा है, तो ग्रिफिन फॉलिकल्स कहाँ से बनेगा और उससे कहाँ से ओव्यूलेशन हो पाएगा. तो ओवम ही नहीं है बॉडी में, तो फिर बॉडी में जब ओवम नहीं है तो फिर फर्टिलाइजेशन ऐसे भी नहीं होगा. सिंपल. तो फिर मेन बात है, प्रोजेस्टेरॉन की जब लेवल इंक्रीज हो जाती है तो फिर ये जीएनआरएच, एलएच, एफएसएच सबको नेगेटिव फीडबैक देता है. तो फिर सब हार्मोन ही, ना ओव्यूलेशन होगा, ना फॉलिकल डेवलप होगा, कुछ भी नहीं. और फिर इट इनहिबिट ओव्यूलेशन एज वेल एज इम्प्लांटेशन, ठीक है. और फिर दे अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट और रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म. ओके. और हार्मोन वाले में वो क्या काम करता था, यूट्रस, दे मेक्स यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन. और फिर सेकेंड, दे मेक्स सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म. दे मेक्स सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म. ओके. Saheli, it is a non-steroidal preparation. It is developed at CDRI, Central Drug Research Institute, Lucknow, in India. It has high contraceptive value. With lesser side effect. It is once a week pile, i.e. twice a week for initial 3 months and then once a week after onwards. Okay. Saheli is a serum इसे कहा गया, सेंट क्रोमा इसमें ना था हमें. हाँ, सीरम सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर. इट ब्लॉक्स एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स ऑन इंडोमेट्रियम एंड प्रिवेंट इट्स प्रोलिफरेशन, प्रिवेंट इम्प्लांटेशन. हाँ, जब प्रोलिफरेशन ही नहीं हुआ, इंडोमेट्रियम तैयार ही नहीं है इम्प्लांटेशन के लिए, तो कहाँ से होगा इम्प्लांटेशन. सिंपल सी बात है. अब देखते हैं इंजेक्टेबल. प्रोजेस्टेरॉन अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन आर यूज्ड एज इंजेक्शन बाय फीमेल्स, जिसे कहते हैं डिपो प्रोवेरा. Their mechanism of action is like piles, but contraception lasts for a longer period. DMP,
depot medroxyprogesterone acetate, DMP, depot medroxyprogesterone acetate, depot depot medroxyprogesterone acetate for 3 months. NETEN, nor sorry norenthi norenthis norenthesterone net en norenthesterone in for 2 months. ये एनसीईआरटी में नहीं है. इम्प्लांट्स ये कहाँ पे होता है? ये फोर आर्म पे, ठीक है. अपर आर्म. प्रोजेस्टेरॉन अलोन और इन कॉम्बिनेशन विथ एस्ट्रोजन आर यूज्ड एज इम्प्लांट्स under the skin by females. This mechanism of action is like piles, but contraception lasts for longer period. Example, norplant. Norplant 6 small silicon capsule implanted under the skin in fan shape manner. No suturing is required. ये 5 साल के लिए होता है, 5 साल के लिए. Levonorgestrel नॉरप्लांट में रहता है. लिवोनॉर्जेस्ट्रल, ठीक है. नॉरप्लांट में 6 small silicon capsule implanted under the skin in fan shape manner. No suture is required, ठीक है. इम्प्लानॉन प्रोजेस्ट्रॉन ये 3 years तक के लिए, ठीक है. सिंगल रॉड डिवाइस implanted under a wide bore needle. Emergency contraceptives. It is used in case of missed piles. Emergency contraceptives. It is used in case of missed piles or unprotected causal intercourse, rape cases. Progesterone alone or in combination with estrogen and used as an emergency contraceptive. Progesterone alone or in combination with estrogen. And used as an emergency contraceptive. Used within 72 hours of unprotected coitus. Highly effective during first 24 hours. Progesterone alone or in combination with estrogen and used. Progesterone alone or in combination with estrogen. And used as an emergency contraceptive. Used within 72 hours of unprotected coitus. Highly effective during first 24 hours. Example, eye pills, unwanted 72, etc. IUDs insertion within 72 hours can also used as emergency contraceptive. Mifepristone antiprogesterone. Antiprogesterone piles also used as emergency contraceptive. Mifepristone antiprogesterone piles also used as emergency contraceptive. Sterilization method or surgical method. They are also used as terminal method. They are also known as the terminal method.
IUD's insertion within 72 hours can also used as a emergency contraceptive. Mifepristone, antiprogesterone piles also used as emergency contraceptive. Sterilization method or surgical method, they are also known as the terminal method for couples that do not want further pregnancy. For couples that do not want further pregnancy, they are also known as terminal method. They are also known as terminal method for They are also known as terminal method for couples that do not want further pregnancy. Highly effective method, but reversibility is poor. Highly effective method. Highly effective method, but reversibility is poor. Highly effective method, but reversibility is poor. Surgical intervention that blocks gamete transport and prevent pregnancy. Vasectomy for males. In this, a small part of vas deferens is removed. And or tied up through the scrotum. Tubectomy for females. In this, a female part of oviduct is removed or tied. In this, a small part of oviduct is removed or tied up through the abdomen or vagina ke bhi through. Okay. MTP's medical termination of pregnancy. MTP, medical termination of pregnancy. MTP, medical termination of pregnancy. Intentional or voluntary termination of pregnancy before full term is called MTP or induced abortion. Nearly 45 to 50 million MTPs are performed in a year. Nearly 45 to 50 million MTPs are performed in a year. It is equal to 1/5 of total number of conceived pregnancy in a year. It is equal to 1/5 of total number of conceived pregnancy in a year. Kitna? 45 to 50 million. 45 to 50 million MTPs are performed in a year. Okay. MTPs are considered relatively safe during first trimester. MTPs of second trimester is quite riskier. RU486 mifepristone plus misoprostol, antiprogesterone plus prostaglandin, antiprogesterone pill, abortion pill. RU486 यूज किया जाता है. अच्छा. Government of India legalized MTP in 1971. Government of India legalized MTP in 1971 to prevent illegal abortion and indiscrimination between child and female feticides. Development of India legalized MTPs. Government of India legalized MTPs in 1971. Government of India legalized MTPs in 1971 to prevent illegal abortion and indiscrimination between child and female feticides. Government of India legalized MTPs in 1971 to prevent illegal abortion and indiscrimination between child and female feticides. Why MTP? To get rid of unwanted pregnancy, failure of contraceptive, rape cases,
Why MTP? To get rid of unwanted pregnancy, failure of contraceptive, rape cases, continuation of pregnancy is harmful for mother or fetus or both. Okay. STIs, sexually transmitted infections, 15 to 12 years के लोगों को सबसे ज़्यादा होता. Yes, teenagers. Infections which are transmitted through sexual intercourse are called ITS, sexually transmitted infection, or venereal disease, venereal disease, or reproductive tract disease. Except for genital herpes, hepatitis B and AIDS, all other STIs are completely curable if detected early and treated properly. genital herpes, hepatitis B और AIDS, इन तीनों का कोई इलाज नहीं है. genital herpes, hepatitis B or AIDS, genital herpes, hepatitis B and AIDS, genital herpes, hepatitis B and AIDS. Except for genital herpes, hepatitis B and AIDS, all the other STIs are completely curable if detected early and treated properly. Okay. Initial minor symptoms: itching, fluid discharge, slightly pain, swelling, or genital region. Itching, fluid discharge, slight pain, swelling. Itching, fluid discharge, slight pain, swelling. ये सब genital region में अगर हो रहा है तो ठीक है. STIs. AIDS is extremely fatal. AIDS and hepatitis B can be transmitted through sharing. AIDS is extremely fatal. ठीक है. AIDS and hepatitis B can also be transmitted through sharing of injection needles and surgical instrument with infected person. Through sharing of injections, needles, and surgical instrument with infected person. Through intrafusion of contaminated blood. Through infected mother to fetus via placenta. Through sharing of injection needles and surgical instrument with infected person. Okay. Second, through transfusion of contaminated blood. Third, through infected mother to fetus via placenta. Okay. Disease causative agent. Chlamydiasis, Chlamydia trachomatis. inside cell living में ये होता है. ठीक है. Chlamydiasis, Chlamydia trachomatis. Gonorrhea, Naris gonorrhea, for preventing bleeding in fetus. For preventing bleeding in fetus. Gonorrhea, Naris gonorrhea. Syphilis, Treponema pallidum. Syphilis, Treponema pallidum. Syphilis, Treponema pallidum. ओके. ये प्लेसेंटा क्रॉस कर लेता. अच्छा. सिफिलिस. कैंक्री हीमोफाइलस डिग्री. पेनफुल. ये चारों क्या था? 1 2 3 4. ये चारों था बैक्टीरियल डिजीज था. ये चारों था बैक्टीरियल डिजीज. क्लेमाइडियसिस, गोनोरिया, सिफिलिस और कैंक्री. क्लेमाइडियसिस
chlamydia, trichomatis, gonorrhea, naris gonorrhea, syphilis, treponema pallidum, cancri, hemophilus degree. ये चारों है बैक्टीरियल. ओके, अब देखते हैं प्रोटोजोन. प्रोटोजोन ट्राइकोमोनियसिस, ट्राइकोमोनास वैजिनालिस, yellow discharge from vagina. Cancri, hemophilus degree. Cancri, hemophilus degree. Trichomonas, trichomonas vaginalis, yellow discharge from vagina, trichomonas vaginalis, trichomonas vaginalis. प्रोटोजोन है, ये प्रोटोजोन है. ट्राइकोमोनियासिस ये है प्रोटोजोन. ठीक है, ट्राइकोमोनास वैजिनालिस, येलो डिस्चार्ज फ्रॉम वजाइना. हेपेटाइटिस बी ये वायरस है. ठीक है, अब 4 है वायरस का. वायरल हेपेटाइटिस बी वायरस. एड्स, HIV ये ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये एड्स हो गया. ठीक है, जेनाइटल हर्प्स, HSV2, हर्प्स सिम्प्लेक्स वायरस 2, जेनाइटल हर्प्स. ठीक है, जेनाइटल वार्ड्स, HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. जेनाइटल वर्ड्स, HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. जेनाइटल हर्प्स, HSV2, हर्प्स सिम्प्लेक्स वायरसेस 2. हेपेटाइटिस बी वायरस. एड्स, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस. जेनाइटल हर्प्स, HSV, हर्प्स सिम्प्लेक्स वायरस 2, जेनाइटल वार्ड्स, HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. लेटर कॉम्प्लिकेशन इंक्लूड PIDs, pelvic inflammatory disease. Later complication include PIDs, pelvic inflammatory disease, stillbirth. अच्छा, लेटर कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? PIDs, pelvic inflammatory disease, stillbirth, abortion, ectopic pregnancy, infertility, cancer of genital areas. For prevention, avoid sex with unknown or multiple partner, use of barrier during coitus, condom,
In case of any doubt, one should go to qualified medical professional for detection and proper treatment. Infertility, relative sterility, any couple who is not able to conceive even after 1 to 2 years of regular unprotected sexual intercourse. प्राइमरी इनफर्टिलिटी दो तरह का होता है, एक हो गया प्राइमरी इनफर्टिलिटी और दूसरा सेकेंडरी इनफर्टिलिटी. प्राइमरी इनफर्टिलिटी, अ पर्सन हु हैव नेवर कंसीव. Infertility can be due to physical, psychological, immunological, congenital, drugs and disease, etc. Secondary fertility, a person who have conceived earlier. Infertility in male, low sperm count, oligospermia जिसे कहते हैं, absent or no sperm, azoospermia, azoospermia, ठीक है. लो स्पर्म मोर्टिलिटी, एस्थेनोजोस्पर्मिया, लो स्पर्म मोर्टिलिटी, एस्थेनोजोस्पर्मिया, डिफेक्टिव स्पर्म स्ट्रक्चर, टेराटोजोस्पर्मिया, क्रिप्ट ऑर्चिडिज्म, hidden testes, as they are prevent testes, hidden testes, azoospermia as they are present in abdomen. हाँ, अगर abdomen, ठीक है. 7 month के टाइम होता है ना डिसेंट. Hydrothermia due to wearing of tight garment. Gonadotrophin deficiency. Alcoholism, Klinefelter syndrome XXY, erectile dysfunction. Infertility in female, anovulation, no menstruation, oligo-ovulation, less ovulation. Anovulation मतलब क्या, no menstruation, okay. Gonadotrophin deficiency, less luteal activity, prolactin imbalance, estrogen or progesterone imbalance, prolactin imbalance, less luteal activity, gonadotrophin deficiency. Motility of oviduct is impaired, uterus structure is defected, Motility of oviduct is impaired, uterus structure is defected. हाँ. अब देखते हैं ART, assisted reproductive technology. In vitro fertilization method, fertilization is occurring outside the body, laboratory, under similar conditions. In vitro fertilization method, fertilization is occurring outside the body, outside the female body, मतलब in laboratory under similar conditions. ठीक है. ये जैसे यहाँ पे पेट्री डिस्क पे है, ठीक है, पेट्री डिस्क पे है, और यहाँ पे जायगोट बनाया गया. जायगोट और अर्ली एम्ब्रियो up to 8 blastomere is transferred into fallopian tube, तो इसे कहेंगे ZIFT, zygote intrafallopian transfer. जायगोट बनने के बाद जायगोट और अर्ली एम्ब्रियो है up to 8 blastomere, तो इसे कहेंगे
अप टू 8 ब्लास्टोमियर है तो फिर इट इज़ ट्रांसपोर्टेड इनटू फैलोपियन ट्यूब, इट इज़ ट्रांसपोर्टेड इनटू फैलोपियन ट्यूब, इसे कहेंगे ZIFT, क्योंकि जाइगोट अभी ट्रांसफ़र किया गया, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। हाँ जाइगोट अभी यूज छोटा है तो फिर उसको फैलोपियन ट्यूब में आराम से वो आ गया, तो फिर जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। ओके, जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो बट मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा है तो उसको यूट्रस में इम्प्लांट किया गया, इज़ ट्रांसफर्ड इनटू यूट्रस, तो इसे कहेंगे IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र। ओके, सबसे पहला आता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र मेथड, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र मेथड, इस पर फ्रॉम हस्बैंड और मेल डोनर वहाँ से लिया जाता, और हाँ यही है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र मेथड। और टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम जो है, ठीक है, ये ओवम है फ्रॉम वाइफ और डोनर फीमेल जो कोई भी, ठीक है, आर कलेक्टेड एंड इंड्यूस्ड टू फॉर्म जाइगोट, induced to form zygote under similar conditions, are collected and induced to form zygote under similar condition, ठीक है, तो जाइगोट बन गया। अगर अप टू 8 ब्लास्टोमियर है, अप टू 8 ब्लास्टोमियर है तो उसे फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाता, तो उसे कहते हैं ZIFT, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, ठीक है। और फिर जब 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा हो चुका है, 8 ब्लास्टोमियर से अगर ज़्यादा है तो फिर उसे यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है, एंड इसे कहते हैं IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र। ओके, सेकेंड केस है ICSI, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। In this, sperm is injected into the cytoplasm of ovum. In this, sperm is injected into the cytoplasm of ovum. ये ओवम हो गया और ये स्पर्म इंजेक्ट किया गया, इसे कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। In this, sperm is injected, in this sperm is injected into the uterus of ovum. In this sperm is injected, in this sperm is injected into the cytoplasm of ovum. In this sperm is injected, in this sperm is injected into the cytoplasm of sperm. In this sperm is injected, in this sperm is injected into the cytoplasm of ovum. In this sperm is injected into the cytoplasm of ovum. In this sperm is injected into the cytoplasm of ovum. In this sperm is injected into the cytoplasm of ovum. In vitro fertilization, in vitro fertilization. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ये स्पर्म ये ओवम में डाला गया। इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म ट्रांसफर, इन दिस स्पर्म इज इंजेक्टेड इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम। ओके, अब सेकंड है इन विवो फर्टिलाइजेशन मेथड, इन विवो फर्टिलाइजेशन मेथड, फर्टिलाइजेशन इज अकरिंग इनसाइड द फीमेल बॉडी, फर्टिलाइजेशन इज अकरिंग इनसाइड द फीमेल बॉडी, फर्टिलाइजेशन इज अकरिंग इनसाइड द फीमेल बॉडी। Gamete transfer method, GIFT, gamete intrafallopian transfer, gamete transfer method, gamete transfer method, GIFT, gamete intrafallopian transfer, gamete intrafallopian transfer. In this, ovum is collected from a donor female. एक सेकेंड, ये है इन वीवो वाला, मतलब फर्टिलाइजेशन इज अकरिंग इनसाइड द फीमेल बॉडी। ओके, तो यहाँ पे हो गया गैमेट ट्रांसफर मेथड। सबसे पहला गैमेट यहाँ पे ट्रांसफर किया जाए, हाँ क्योंकि फर्टिलाइजेशन बॉडी में तो गैमेट ही दे दिया जाएगा ना, हाँ ठीक है। GIFT, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इन दिस ओवम इज कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर फीमेल एंड ट्रांसफर्ड इन द ओविडक्ट ऑफ द फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन, ओके, बट कैन प्रोवाइड suitable environment for fertilization and further है, ये किसका है, but can provide suitable environment and fertilization and further embryo development. अच्छा, मतलब हाँ इसी फीमेल के बारे में वो कहा गया है, मतलब वो प्रोड्यूस नहीं कर पाई ओवम बट कैन प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ओके, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेकेंड आता है इसमें, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेकेंड आता, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन।
This method is used when the male partner. This method is used. This method is used when the male partner is not able to. This method is used. This method is used. Artificial insemination. Artificial insemination. This method is used when the male partner is not able to inseminate or has low sperm count. Artificial insemination. Artificial insemination. This method is used when the male partner is not able to inseminate or has low sperm count. ठीक है. Second, sperm from husband or donor is collected and artificially inseminated into vagina or uterus. IUTI, intrauterine insemination. Sperm from husband or donor is collected and artificially inseminated into vagina or uterus. IUI, intrauterine insemination. Sperm from husband or donor is collected and artificially inseminated into vagina or uterus. ठीक है, इसे कहते हैं intrauterine insemination. Intrauterine insemination. ओके, तो ये हो गया ICSI. अच्छा, ICSI भी और IUI, इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन, और GIFT